Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve exercise 2.2. Our first question is write the base and exponent in each of the following. Before starting question number 1, let's get to know what is base, exponent and coefficient. A exponent is the power of the variable or number and coefficient is the number before variable. एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर है, जबकि कोफिशिएंट वेरिएबल से पहले लिखा गया नंबर होता है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 to the 15th power. What is exponent? The exponent of the number says how many times to use that number in the multiplication. It is written as small number to the right and above to the base number. In this value 7 to the 15th power, the exponent 15 says to use the 7 is 15 times in multiplication. इसका मतलब है 7 to the power 15 में कि हम 7 को 15 times अपनी multiplication में इस्तेमाल करेंगे. In this value 7 is base and 15 is exponent. Our second value is minus 189 to the 10th power. In this value minus 189 is base and 10 is exponent. Our third value is 108 to the 64 power. In this value 108 is base and 64 is exponent. Let's move on second question. Our second question is indicate which of the following are positive real number and which are negative real number. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से नंबर पॉजिटिव रियल नंबर कहलाते हैं और कौन से नंबर नेगेटिव रियल नंबर हैं. Our first value is 8 to the 4th power. Very clear, no doubt. Here our base is positive and exponent is also positive. That's why this type of number is called positive real number. Second number is minus 113 to the 107 power. For understanding this number, we use smaller one number. The number is minus 2 to the 5th power. In this number we multiply minus 2 5 times. When we multiply 2 5 times, answer is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. But what about sign? When we multiply negative sign 5 times, our answer is minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus or plus minus minus. At the end we get negative answer. That's why this type of number is called negative real number. What is the logic? If our base is negative and exponent is odd number. Once again, if our base is negative and exponent is odd number, this type of number is called negative real number. Third number is minus 912 to the 108 power. For this number we also use smaller number for understanding. Our number is minus 2 to the 4th power equals to, when we multiply 2 4 times, our answer is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. But when we multiply sign 4 times, minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus, at the end we get positive sign. What is logic? This type of number is called positive real number. If our base is negative but our exponent is even number, once again,
if our base is negative but exponent is even number, this type of number is called positive real number. Our question number 3 is, which is the correct way of finding the value of 38 multiplied by 83 to the power of 9? First option is, we first multiply 38 with 83, then find the ninth power of this product. Second option is, we first find the ninth power of 83, then multiply it with 38. To find the value of this type of number, we always find the power of number first and then multiply it with other number. इस तरह के नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम किसी भी नंबर की पावर को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसे साथ दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. यही वजह है सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, या सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, before solving the other questions, let's study the laws of exponent. There are two laws of exponent. First one is law of power of product. Let's see the example. We have a is to power m multiplied by a is to power n multiplied by a is to power p. अगर हमारे पास बेस सेम और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम बेस सेम लेने के बाद एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 2 is to power 4 multiplied by 2 square multiplied by 2 cube equals to, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो बेस सेम लेने के बाद हम एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे. 4 + 2 + 3 equals to 2 is to power 9 is our answer. लॉ को एक बार फिर देख लेते हैं. बेस सेम पावर ऐड, हमारे पास लॉ क्या है? बेस सेम पावर ऐड. लेट्स सी इट इन डिटेल. द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर हैविंग द सेम बेस, द एक्सपोनेंट आर एडेड एंड द बेस रिमेन अनचेंज. किसी भी डिफरेंट पार्ट्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं, जबकि बेस अनचेंज यानी कि वो तब्दील नहीं होती. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू पावर 5. इट मीन्स कि a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, and our answer is a is to power 5 multiplied by b is to power 5. What is the law? Let's see in detail. The power of product of two numbers is equal to the product of their powers. Let's move on. Question number 4. Simplify the following. Question is minus 91 to the power 4. It means minus 91 multiplied by 4 times, and our answer is minus 91 to the power 4 equals to 68,574,961. Our fifth question is 5 is to power 4 multiplied by 5 square. यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा. अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए बेस को सेम लेके हम इसके एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं. 5 is to power 4 plus 2 equals to 5 is to power 6. Our answer is 15,624. Our next question is a multiplied by b square multiplied by c cube multiplied by b square multiplied by a is to power 5 multiplied by c square. यहाँ भी रूल 1 अप्लाई होगा कि अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए हम सेम बेस के एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन. a इंटू बी इज टू पावर 5, बेस सेम 1 + 5 equals to a is to power 6. In the same way b square multiplied by b cube equals to b is to power 2 plus 3 equals to b is to power 5. And last one, c cube multiplied by c square equals to c cube plus 2
equals to c is to power 5. Our answer is a is to power 6 multiplied by b is to power 5 multiplied by c is to power 5. Last question is 3 into 5 into xy whole is to power 14. जब किसी भी ब्रैकेट के ऊपर एक्सपेरेंट दिया जाए तो इसका मतलब वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के ऊपर मौजूद होता है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये एक्सपेरेंट तमाम वैल्यूज़ पर लगा देंगे. तो हमारे पास आंसर क्या होगा 3 is to power 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 is to power 14 मल्टीप्लाइड बाय x is to power 14 मल्टीप्लाइड बाय y is to power 14. चूँकि तमाम बेसिस अलग अलग थी लिहाजा हमने सबके ऊपर एक्सपेरेंट 14 प्लेस कर दिया. It's all about today's exercise 2.2. Hope you understand 2.2 and able to solve the remaining questions. Take care. Allah Hafiz.